हेलो गाइस, मैं आप सभी के लिए लाया हूँ सेम फॉर एमसीक्यू अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग 4। फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स डू नॉट कम अंडर रिजर्व एंड सरप्लस। तो इसमें आएगा प्रोविडेंट फंड। ओपनिंग बैलेंस और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वॉज ₹7500, डिविडेंड पेड ₹1500, ending balance of profit and loss account was 5000, net income net loss was dash, इसमें आएगा लॉस ₹1000। थर्ड, the final account of companies are to be prepared in accordance with the provision of dash of the Companies Act, इसमें आएगा शेड्यूल थर्ड। Fourth question, the company's final account are prepared in dash form, vertical form आएगा। Fifth question, the summarized balance sheet in dash form is supplemented by scheduled given details information, इसमें vertical आएगा। Sixth question, the additional information for specific item specified in schedule third should be dash to the extent applicable, इसमें आएगा डिस्क्लोज। सेवेंथ क्वेश्चन, द डैश वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट शुड बी इंडिकेटेड बाय वे ऑफ अ नोट, इसमें आएगा मार्केट। द बैलेंस इन शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट आफ्टर द री इशू ऑफ द फॉरफिटेड शेयर इज टू बी सो हैज कैपिटल रिजर्व। द नाइन क्वेश्चन, the exchange difference for repayment of liability relating to purchase of fixed assets is to be disclosed as a change on assets, आएगा आंसर। The amount of debtors do more than dash month is to be so separately, 6 months आएगा। Current liability means liabilities payable within dash month from the date of balance sheet, 12 आएगा। फिक्स डिपॉजिट विद बैंक शुड बी सो हैज डैश बैंक बैलेंस। इमूवेबल प्रॉपर्टीज, 13 क्वेश्चन, इमूवेबल प्रॉपर्टीज हेल्ड फॉर कंपनीज ऑपरेशन इज टू बी सो हैज फिक्स एसेट्स। 14 क्वेश्चन, इमूवेबल प्रॉपर्टीज हेल्ड फॉर सोर्स ऑफ एडिशनल इनकम इज टू बी सो हैज इन्वेस्टमेंट। देखिए 13 में था हेल्ड फॉर कंपनीज ऑपरेशन, इज टू बी सो हैज, इसमें फिक्स से जाएगा। और इसमें हेल्ड फॉर सोर्स ऑफ एडिशनल इनकम इज टू बी सो हैज इन्वेस्टमेंट आएगा। 15 क्वेश्चन, द इंटरेस्ट ऑन लोन विच हैज अक्योर्ड एंड डू इज सो हैज, इसमें लोन आएगा। डेबिट 16 क्वेश्चन, डेबिट बैलेंस इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैन बी सो हैज miscellaneous expenditure and reduction from reserve। 17 question, uncalled amount on share held by investment is so under the heading contingent liability आएगा। 18 question, bills discounted is to be so as dash contingent liability। 19 question, the value of secure loan should also show particulars of dash offered security आएगा। The capital work is progress in added to fixed assets आएगा। 21 question, loose tools are so has dash assets current assets, livestock is so under dash assets fixed assets, bill receiver is so under dash trade receiver। Arrears of 24 question, arrears of preference dividend is so under dash liability contingent liability, interest accrued but not due to secured loan is so under current liability। 26 question, unclaimed dividend is owned under dash current liability, repair to building must be shown as a dash on debit side of profit and loss account, separate item, public deposit accepted by company must be shown under
unsecured loan. Development expenditure is so under dash other current assets. Short term loan is loan due for more than dash year 1 year आएगा. Remuneration to MD must be so has a dash item in profit and loss account separate. 33 question. Bills receiver is so under dash in balance sheet trade receiver. 34 question. Net blocks of fixed asset is shown has dash balance sheet. इसमें वर्टिकल आएगा. 35 question. Net block is gross block less dash accumulated depreciation. 36 question. Income tax under depute dash